Good morning everyone. I am Rajdeep Singh from SIRT Excellence, the SAGE group, and today we are going to start revision classes from Unit 1. So first topic we are going to study is parallel processing. So first of all we will understand what is parallel processing. So there are two things, parallel processing and sequential processing. Parallel processing is something or some processing which is done side by side, or you can understand it by like this, that if some processing has to be done of a large there is a large piece of task which you have to complete, so you will divide it into pieces and you will execute those pieces into different execution unit to complete that task फास्टली एंड मोर इफिशिएंटली. सो हम पैरेलल प्रोसेसिंग क्या है अगर हम समझें एक तरीके से, तो इट इज़ नथिंग बट डूइंग आवर वर्क फास्टली बाय executing its part in parallel processing units. What is described here, that it is a term which is used to denote the large class of techniques that are used to provide simultaneous data processing tasks for the purpose of increasing computational speed. There are variety of ways by which parallelism can be achieved. Now you have to understand what is parallelism. जैसे अगर मैं example लूँ कि I am preparing this lecture and you are watching some movie at your place. So these are not there are two tasks which are happening parallelly, but these two tasks cannot be included in the category of parallel processing. Why? Because these two tasks are not related with each other. So जब भी हम पैरेलल प्रोसेसिंग की बात करेंगे तो हम उन दो टास्क की बात करेंगे जो आपस में एक दूसरे से रिलेटेड है किसी एक टास्क का रिजल्ट देने में. तो क्लास अगर हम बात करें पैरेलल प्रोसेसिंग को, तो पैरेलल प्रोसेसिंग को क्लासिफाई कई तरीके से किया जा सकता है बेस्ड ऑन द इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोसेसर, interconnection between processors and flow of information through the system. So first of all we'll discuss the Flynn's classification, which is used to denote the parallel processing and it is based on the multiplicity of instruction stream. So what is Flynn's classification? It was introduced by a scientist named M.J. Flynn, and in 1972, and this classification was based on the multiplicity of instruction stream and data stream. So there are four categories which comes under Flynn's classification. First is SISD, second one is SIMD, third one is MISD, and fourth one is MIMD. Now what does these words stand for? So SISD stands for single instruction stream and single data stream organization. SIMD stands for single instruction stream and multiple data stream. MISD is for multiple instruction stream and single data stream, and MIMD stands for multiple instruction and multiple data stream organization. So one by one we'll look towards each organization. So first one is single instruction, single data stream. In this type of organization, actually this organization, if works in a standalone mode, it will not provide us a parallel processing. But if we use these organization in parallel, we can implement a different multiple functional unit to which can provide us parallel processing. So this organization consists of a single computer which contains one control unit, one processing unit and one memory unit. इसमें इंस्ट्रक्शन सीक्वेंशियली एग्जीक्यूट होता है. तो हमको अगर पैरेलल प्रोसेसिंग अचीव करनी है तो एक से ज़्यादा SISD ऑर्गेनाइजेशन का यूज़ करना पड़ेगा. अगर हम यहाँ देखें इस ब्लॉक डायग्राम में, तो दिस इज कंट्रोल यूनिट,
which is connected to some input output peripherals. Now this control unit is issuing instruction to processor. So one instruction is issuing to the processor, and this processor is fetching the data from memory. So data stream is coming up from memory. So one instruction is applied to one data stream, and the result is stored back into the memory. Now where this instruction streams comes from to the control unit, it is also comes from memory. So this is a simple block diagram which is representing SISD organization. In the similar way, if we talk about SIMD organization, single instruction stream and multiple data stream organization, this organization includes various processing units under supervision of common control unit, many processing unit under supervision of common control unit. यहाँ नाम से ही समझ में आ रहा है सिंगल इंस्ट्रक्शन मल्टीपल डेटा, तो इंस्ट्रक्शन एक ही इशू होगा बाय सिंगल कंट्रोल यूनिट टू डिफरेंट प्रोसेसिंग यूनिट, और डिफरेंट प्रोसेसिंग यूनिट अलग अलग डेटा फेच करेंगे अलग अलग मेमोरी यूनिट से। तो यहाँ आप ब्लॉक डायग्राम पे अगर समझे, जैसे एक एग्जांपल से समझे हम कि अगर हमको एक इंस्ट्रक्शन एडिशन का इशू हो रहा है, उसको हमें एक डेटा ए पी पे लगाना है, दैट मीन्स ए प्लस बी कैलकुलेट करना है, एक डेटा सी डी पे लगाना है, एक डेटा ई एफ पे लगाना है। तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ सिंगल इंस्ट्रक्शन मल्टीपल डेटा स्ट्रीम। यहाँ भी फिगर वही है, बस हमने प्रोसेसिंग यूनिट और मेमोरी यूनिट्स को बढ़ा दिया है, मल्टीप्लाई कर दिया है। सो one single instruction stream is issued to all processing unit P1, PU1, PU2. PU stand for processing unit. You can see here in the diagram, downside of diagram I have written all the abbreviations. Then M stands for memory unit, DS stands for data stream. So data stream 1, data stream 2, different data stream will be issued to the processing unit, and one single instruction stream will be applied on it, and result will be stored back into the respective unit. And these memory will the instruction will be fetched from these memory units only. So this is an example of SIMD organization. Now talking about next organization, that is MISD. In this organization, multiple instruction stream is applied on single data. You must be thinking how it is possible. So this type of organization is of theoretical importance. It does not have any practical implementation. यहाँ पे हम बहुत सारे कंट्रोल यूनिट यूज कर रहे हैं और एक मेमोरी यूनिट यूज कर रहे हैं। अगर आप इसको समझें तो यहाँ पे अलग अलग इंस्ट्रक्शन स्ट्रीम आ रहे हैं। फॉर एग्जांपल एक इंस्ट्रक्शन स्ट्रीम है एडिशन, एक इंस्ट्रक्शन स्ट्रीम है मल्टीप्लिकेशन, एक इंस्ट्रक्शन है डिवीजन एंड सो ऑन, और उसको हम एक ही डेटा पे अप्लाई कर रहे हैं, लेट्स से ए और बी पे अप्लाई कर रहे हैं। ये क्यों इसका थ्योरेटिकल इंपॉर्टेंस है? बिकॉज इसका प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन पॉसिबल नहीं है। बिकॉज आप खुद सोचें कि अगर एक सेट ऑफ डेटा ए बी आपको मिला, आप उस पर एडिशन भी परफॉर्म कर रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन भी परफॉर्म कर रहे हैं, डिवीजन भी परफॉर्म कर रहे हैं, तो व्हाट इज द रिजल्ट एट लास्ट? So the result will be the instruction which has been performed on that data in the last. तो पीछे जो इंस्ट्रक्शंस हुए हैं उनकी कोई वैल्यू नहीं रह जाती, इसलिए इसका थ्योरेटिकल इंपॉर्टेंस है, कोई प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन पॉसिबल नहीं है। नाउ लास्ट वन इज MIMD, दैट इज मल्टीपल data stream, multiple instruction stream and multiple data stream organization. Now this organization refers to a computer system which is capable of processing several programs at same time. This is an example of the computer system which we are using nowadays. So such systems can issue multiple instruction from memory to different control unit, and multiple instructions are issued to different processing unit, and different processing unit apply that instruction on different डेटा स्ट्रीम। तो यहाँ पे बहुत सारे काम पैरेलली हो रहे हैं। दिस इज ए परफेक्ट एग्जांपल ऑफ द सिस्टम विच वी आर यूजिंग नाउ डेज। सो दिस वाज अबाउट फ्लिंस क्लासिफिकेशन। इसमें 4 चीजें हमें पढ़नी है। फर्स्ट वन इज SISD, दैट इज सिंगल इंस्ट्रक्शन स्ट्रीम एंड सिंगल डेटा स्ट्रीम। सेकेंड वन इज SIMD, थर्ड वन इज MISD, एंड फोर्थ वन इज MIMD. Hope you got the points which I have discussed just now. If you have any query regarding this topic, you can message me in comment. Thank you so much.